Hey guys, so we are back with another video. मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि वीडियो जो है वो पार्ट 2 है वीडियो का। कौन सी वीडियो का? वो वीडियो है रिलीजन वर्सेस साइंस, द रियल स्टोरी। प्रोजेक्ट शिवोहम पार्ट 1 हम रिएक्ट कर चुके हैं। पार्ट 2 पूरी वीडियो का ये रहा। ठीक है, इसमें हमने बोला था कि हम दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द डालेंगे और ये रहा आपका दूसरा पार्ट। और भाई रिकमेंडेड वीडियो है, पहले पार्ट में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट में करेंगे। और ये वीडियो थोड़ी टेक्निकल है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखना, डीप, थोड़ा इंटेंस समझ रहे हो आप? हाँ, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा। और आप वर्ड्स पे ध्यान देना, इनके वर्ड्स पे, और उसके मीनिंगफुल कितने मीनिंगफुल है। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरुआत। और वीडियो को शुरू करने से पहले क्या करते हैं? लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। The word pramana has two parts. Pra means forward or outward, and mana means measurement. Pramana means the one that gives you assurance about something in future. In fact, even today we use the word praman for a promise. In fact, the English word promise is also cognate to the Sanskrit word pramana. Now, when you're consuming knowledge, what assures you that knowledge is authentic? To make sure that the knowledge that we consume is authentic and is reliable, one has to follow these 6 pramanas: Pratyaksha, Anumaana, Upamaana, Arthapatti, Anupalabdi, and Sabda. As I said, these 6 pramanas are different techniques to acquire the right knowledge. Starting with the first one, Pratyaksha, acquiring knowledge through self-experience. Imagine a toddler who never knew what is fire, and for the first time he or she touches a candle flame and gets burned, and from that point onwards, never in his or her life, voluntarily, this toddler, when he or she grows up into a man or woman, would never voluntarily touch a flame because he or she knows that it will burn. It is through a practical self-experience that knowledge is gained, and this is called as Pratyaksha. And the second pramana is Anumaana, which means acquiring knowledge through logical conclusion, or you could also call as logical extrapolation. Take a watch for instance. The crown of a watch is generally positioned towards the right. But why? Why is that the crown of a watch is generally positioned towards the right? Imagine that I have no access to internet, but I still have to figure this out. So a logical conclusion what we could make is, generally people in the world, they are more right-handed than left. So when a person is right-handed, he or she want to operate the watch with the right hand. So the only choice is when you wear it on left hand, and to operate with the right hand, the crown of the watch should always be towards the right side of the dial. Now we really don't know for sure if this is the reason why the knob is always on to the right side. But in a given scenario, with a limited number of resources that we have, just trying to logically extrapolate the scenario to find out what is truth. And this way of learning is called as Anumaana. Up next, the third pramana, which is called as Upamaana, acquiring knowledge from examples or similarities. Imagine that you would like to explain to someone about how a satellite revolves around the Earth. Now you cannot see a satellite with a naked eye, so all you could use is moon. You can take moon as an example, which is very much visible for the naked eye. And using moon as an example, just like how moon revolves around Earth, using the same principles, a satellite will also revolve around Earth. So basically here you're drawing parallels or using examples, leveraging the similarities to acquire or pass on knowledge. And this pramana is called as Upamaana. The next pramana is Arthapatti. It is acquiring knowledge through factual extrapolation. That means, basing on one undisputable fact, you extrapolate to acquire knowledge in a reliable manner. Imagine that if you would like to guess or predict if it's going to rain, if there are a lot of clouds in the sky and wind, which are facts. Now you base your assumption or prediction on that fact and you extrapolate the scenario. Because there are clouds and wind, it might rain in a couple of minutes. Now the knowledge that it's going to rain in a couple of minutes is through a factual extrapolation that you did on the basis of clouds and wind. And that way of acquiring knowledge is called as Arthapatti. Another pramana is Anupalabdi, acquiring knowledge from negative conclusion.
This is very interesting. It is always a glass as half full, but thinking about the half glass that is empty, thinking from the other side of the table, shaping up your thoughts to understand things that don't exist, that broadens your imagination. Try out these. Can you imagine what an antimatter would look like without referring to Google? Just relying on your own instincts. What would an antimatter look like? That kind of thoughts which run in your mind while you are trying to visualize what an antimatter is. Knowingly or unknowingly, we are using Anupalabdi. And the last pramana is Sabda, which means acquiring knowledge from spoken and written words. This is what every one of us have been doing right from our childhood, acquiring knowledge through our teachers and parents in schools and colleges. So I'll not say much about this. So finally, summing up it all, in Bharat we have vivid set of schools of thought through which a human could explore nature and each and every element of it, carefully filtering out the knowledge using the 6 pramanas and absorbing the right knowledge and turning that eventually into wisdom to sail through each and every survival instinct throughout his or her own life. Now this is called as dharma. Such a complex intellectual mechanism, dharma, cannot be equated to a religion. As the Western societies came into contact with the Indian culture, since they were not able to comprehend this entire mechanism, a simpler term called as religion is attributed to Bharat. But rightfully, it is not religion, but should be called as dharma. Now if we flip back to where we started, comparing religion and science. Now if you take a close look at science and dharma, dharma is completely human-centric and science is also completely human-centric. And this is the main reason why dharma and science were never conflicting with each other. Dharma seeks to learn, to evolve, and if it is wrong, it is open to adapt. There is no space for dogmatic beliefs in dharma. While unfortunately in certain religions, in the history, such kind of dogmatic beliefs led to this conflict between religion and science. But as far as Bharat is concerned, there has never been a conflict between dharma and science. So till now, we tried to understand how dharma and science were never conflicting with each other by understanding what is under the hood in dharma. Now practically, how did dharma stood as a platform to nurture science? That's what we're going to see in this chapter. Certain practical examples from the ancient history in different fields of mathematics or medicine, etc. Let's get to this last leg of this documentary. For different schools of thought that we saw just now, the Yoga, Sankhya, Vedanta, Mimamsa, etc. For all of these, Vedas stood as the core and corpus knowledge system. They derived much of their philosophical ideas from the Vedas. Now what are Vedas? There are 4 as you all know: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda and Atharvana Veda. And each of these Vedas have 4 internal divisions called as Aranyaka, Brahmana, Samhita and Upanishad. And supporting these 4 Vedas are 6 Vedangas and 4 Upavedas. Each of them specialize in different fields of knowledge. But yes, let's get to the discrete examples. The first one, binary number system. 95% of us are not aware of this fact that binary number system, the roots of it were originated from Bharat. Supporting the 4 Vedas, there is one Vedanga called as Chanda Shastra. And Chanda Shastra is all about how rhythmically you can compose a Sanskritam poem. And as part of it, to calculate the combinations of Guru Laghu, the short syllable and the long syllables. This algorithm that you're seeing on the screen, Dvikaglau, Misraucha, Prudhagla Mishra. These 3 steps of an algorithm to calculate 2 power n is given by Pingalacharya as part of Chanda Shastra supporting the 4 Vedas. I did a 45-minute long documentary on Chanda Shastra focusing on the binary number system. In that video, I walked through these algorithms. Should you be interested, you can find it out. I'll leave the link in the description below. But coming back to our topic, science versus religion. Now since our context is dharma and science, this example shows you how dharma and science complements each other. Another example is Ayurvedam. There are many ancient scriptures like Sushruta Samhita, Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya and so on and so forth, which extensively elaborates the complete Ayurveda. As you can see, there are a lot of specializations and each specialization has specific instructions and procedures well detailed out.
Now, what is Ayurvedam? At one shot, what you're seeing on screen, this is what Ayurvedam would look like. And I made a short documentary on the details of Ayurvedam. Again, I'll leave the link in the description. Coming back again to our position, dharma and science complementing each other. Because Ayurvedam is heavily derived from Atharvana Vedam, one of the 4 Vedas. Example number 3, geometry. Dirghachaturasrakshanya rajjuhu pashvamani tiryang manicha yatat prodak bhute kurutastuda bhayam karoti. The translation is, a rope stretched along the length of the diagonal of a rectangle makes an area which is vertical and horizontal sides make together. In today's world, we call it as Pythagoras, but this is from Kalpa Sutras ascribing to Yajurvedam, one of the 4 Vedas. And there are not just this one, there are tons of geometrical formulas, axioms and theorems like this. Again, coming back to the same position, dharma and science complementing each other. And this topic of Vedic geometry is one of my favorite documentaries that I have produced. It takes you completely back into time as to how geometry evolved in Bharat, and the link would be below. And this one, we call it today as Pythagoras theorem, possibly discovered by Pythagoras in 300 BCE. But it has been used in Bharat since when we don't know, but as old as Yajurvedam, that old is this formula. So you do the math. Example number 4. One of the most powerful contributions that came from Bharat, calculus. Again, a vast majority of us think that calculus was originated in Europe by Leibniz and Newton. With all due respect to Leibniz and Newton, calculus was independently discovered or developed in Bharat almost 300 to 400 years before Newton and Leibniz. And undisputably, here I have given the timeline of major events that happened in India and Europe during this time frame. Calculus was developed as part of Jyotisha Shastra, a Vedanga ascribing to all 4 Vedas. Again, dharma complementing science. Also, I made a very detailed documentary about how calculus originated in Bharat, and I'll leave the link in the description below. I'm just picking up the examples of scientific contributions that came from Bharat from the documentary films that I've already produced. So what you're seeing as examples are thoroughly verified and researched and published as individual documentary films, so that those of you who are interested could explore further. Example number 5, time computation. It would not be an exaggeration at all if we say that Bharat is the only civilization that mastered the art of time computation like no other civilization. Ujjain Mahakaleshwar, the lord of time and death. Ujjain has been the powerhouse of time computation and mathematics for thousands of years. In Bharat, we have developed the geopositioning system with latitude and longitude definition with the Sanskrit names Lambarekha and Deshantara. And we used to have the 0-degree meridian, the prime meridian, passing through Ujjain Mahakaleshwar. And in the year 1884, the British shifted the prime meridian, consolidated around the world to make it start from Greenwich, what we know today. But the time computation techniques that originated out of Ujjain are just unparalleled even till today. Again, like a broken record, re-emphasizing dharma and science, they complement each other. The 6th example probably is the most astonishing of all. The biology of how a sperm and ovum conflates into a fertilized egg and evolving into a human embryo. All this science was just discovered 200 to 300 years ago. But there is an Upanishad, part of Atharvana Veda, called as Garbha Upanishad, which elaborates every minute detail about how a human embryo evolves over the period of 9 months. What you're seeing here in English are the translations of the Sanskritam slokams from Garbha Upanishad. The link to the detailed documentary is below. Again, dharma and science complementing each other. Example number 7, for a change, from political sciences. If today's Constitution of India, we consider that as a fruit, then what is the root in terms of statecraft or public administration? Majority of these lessons, we find them in Atharvana Veda, and from Atharvana Veda derived is Arthashastra, written by Chanakya. It establishes the principles of commerce, public administration, and statecraft, etc. Example number 8, gravity and laws of motion. In ancient India, a Maharshi called as Kanada, he wrote a treatise on Vaiseshika philosophy, one of the schools of thought that we saw just a couple of minutes ago.
Maharshi Kanada, about his observations in the nature, he documented them in a scripture called as Vaiseshika Darshanam. And as part of it, and probably this is the oldest scripture ever known to mankind, to quote gravitational force. Gurutva Prayatna Samyoganam Ukshepanam. When we throw something straight up into the air, the upward movement is called as Ukshepanam, and it is a resultant of downward Gurutva or gravitational force and upward Prayatna, which is external upward force. This is how gravity is defined in Vaiseshika Darshanam by Maharshi Kanada. Also, he formulated laws of motion. Here I just gave the translations, but a detailed documentary link will be given below. Dharma and science. And by now you know what I would say. And this is the most glaring example of all. Number 9. Combinatorics. We know this with the name called as permutations and combinations in our high school. Again, combinatorics originated in Bharat. It was developed again as part of Chandas Shastra to support all the 4 Vedas. So essentially it is from a Vedanga itself. And it was developed by Pingalacharya. And as part of this combinatoric techniques that he developed to articulate Sanskritam poems, he also formulated the triangle, what we know today called as Pascal's triangle, but is actually called as Meru Prasthara. Pingalacharya was estimated to be around 200 to 300 BCE. And he formulated Meru Prasthara back then. And what you are seeing here is a manuscript of Meru Prasthara dated to 700 AD, that is almost 1300 years ago. Pingala's Meru Prasthara is translated by Omar Khayyam, a Persian mathematician in 11th century, Yang Hui, a Chinese mathematician in 13th century, Niccolo Tartaglia, an Italian mathematician in 16th century, and finally by Blaise Pascal in 16th century. And all these, what you're seeing here, are their respective original copies. So undisputably, what we call today as Pascal's triangle was actually originated in Bharat. God knows why it is called as Pascal's triangle. Anyways, coming back. Combinatorics, a field of mathematics that deals with counting, was originated from Bharat and is very much part of the Vedangas, supporting the 4 Vedas. Again, dharma and science, very much hand in hand. I could go on with these examples, but let me conclude this with one last thing. The 10th example, Panchatantra. Even though it is not related to science, I want to show you a pattern. You might definitely heard of spice route and silk route, but there is another route which is kind of a route through which knowledge flowed from Bharat towards the west and as well towards the east. Just take a look at how Panchatantra traveled across West Asia and Europe, getting translated into different languages over hundreds of years. That gives some clues on the flow of knowledge from Bharat towards West Asia and further down to Europe. Rolling back to where we started, these are the reasons why Bharat was revered as Vishwaguru. The rich education system, an inquisitive learning approach with different schools of thoughts, theistic and atheistic, happily coexisting in one society with different pramanas, different kinds of analytical techniques, scientific contributions. These are the reasons why Bharat has been revered as Vishwaguru. And my objective with this doc film is not to brag a cultural supremacy. Absolutely not. I completely agree that Bharat did not invent every great thing in this world, but all the great inventions or discoveries that came from Bharat are not known to the world. And all the credit goes to Islamic invasions and European colonization. Both these invasions destroyed the ancient Indian knowledge system. So shameful. But honestly, I also don't like this victimhood kind of discourse. So my objective with this doc film is to bring forward all the great knowledge sources that we have so that we reincorporate and we reinforce all these great knowledge sources back into our mainstream learning. That is my single objective. And that is why I started this channel, Project Shivoham. Till now we talked about science, but it is very important that we also talk about pseudoscience. Otherwise, your WhatsApp forwards will rule the roost. So let me tell you a very small story. Many years ago, in a Gurukula, there is a guru and his shishya living together. Every day they used to meditate in the morning. And there was a baby deer in the ashram. It used to create a lot of noise by running around. So the guru asked shishya to tie this baby deer to a tree in the backyard of the ashram so that they could meditate
peacefully. The Shishya tied the deer to the tree, and the Guru and Shishya, they meditated peacefully on the day. The same story repeated day after day after day. Years passed, generations passed, and the lineage of Guru and Shishya kept on changing. So did the deer. Finally, at one point in time, in the ashram, it has become a tradition to tie a baby deer to the tree in the backyard. And it is made a tradition to meditate peacefully. So what started as tie the baby deer to the tree so that we can meditate peacefully has got transformed into, to meditate, we must find a baby deer and tie it to the tree near our ashram. The whole narrative got changed. So if someone wants to meditate in the ashram, a baby deer should always be tied to the tree in the backyard. The whole purpose went down the drain and something totally senseless emerged out. And that is called as pseudoscience. So it's very simple to identify the difference between science and pseudoscience. Science does not progress because of the success. Science always progresses because of failures, continuous failures, which is a result of continuous questioning, trying out new things. While pseudoscience will just believe in it, it does not give you any scope to question why is it that way. So whenever you are restricted to question anything, that essentially could be pseudoscience. But having said that, there could be certain spiritual practices which has nothing to do with science, but still being followed. So we need to respect them. You don't need to meddle with anyone's beliefs. But yes, we need to be very much aware of what is science and what is pseudoscience. And this little story is to establish that. So that is a detailed documentary on why there could be possibly a conflict between religion and science. But in Bharat, as far as dharma is concerned, there is never a conflict between dharma and science. In fact, dharma stood as a strong platform for science to thrive. I repeat my words. Dharma stood as a platform on which science thrived in Bharat. Again, my secular sweethearts might have acidity in their stomach, whether they like it or not. This is the fact. So they better learn to deal with it. Now, that is a quick outlook on how ancient Indian education system with different schools of thoughts, different pramanas, theistic and atheistic, happily coexisted, where dharma stood as a fertile ground for science to blossom. And this is the reason why India had incredible scientific temper and great scientific contributions that came in from this land. Our ancestors left us a treasure of critical thinking and inquisitive learning, all as part of dharma. And if we paint a broad brush of secularism, saying that you should be very open to all the religions and all, and throw all this learning down the drain, then we will be remembered as a generation of idiots. One of the greatest values of dharma is Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Irrespective of what your religious beliefs, or caste, or creed, or gender, or race, we all can happily coexist in one part of the world, that is Bharat. And that essentially comes from dharma. It is our collective responsibility to preserve the scientific heritage of this great country. And that is possible only by nurturing dharma. Let me quote these lines from Martin Luther King. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. And dharma matters. So let's break the silence, preserve dharma, and pass on the great scientific heritage of this great country, Bharat. Jai Hind, and as always, thanks for watching. ओके वीडियो हो गई भाई एंड और व्हाट ऑफ वीडियो भाई। जो इसका लास्ट में पार्ट था वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी पढ़ा और जानते हैं, पर ये मैं एक्चुअली में रिकमेंड करूंगा उन बंदों को ना जिनको सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा है ना। मैं धर्म के नाम पे नहीं बोल रहा हूँ, धर्म का मतलब आप समझ, रिलीजन वाइज जो इसमें बात की गई है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, वैसा वाला ठीक नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारतीय संस्कृति बहुत महान और हमारे पास इतनी विरासत में इतनी चीज़ें हमारे एंसेस्टर ने दी हैं, इतनी रिसर्च की उन लोगों ने अपने समय में। सोचो जब कुछ भी नहीं था कितने ज़्यादा आगे थे हम लोग। क्या हुआ, ग्रेजुअली में पुश किया गया पॉवर्टी में भाई साहब, हमें लगातार कोलोनाइज किया गया, लूटा गया, हमारी चीज़ों को तोड़ा गया। मैं हर बार अपनी ऐसी जो भी इससे रिलेटेड वीडियो थे हम बात करते हैं। अब बताओ क्या नहीं था इसमें, पर लास्ट में करेंगे इस टॉपिक के बाद। पहले भाई बोल रहे थोड़ा सा। सो ये वीडियो जब स्टार्ट, मतलब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था तो इसमें ये था कि प्रमाण क्या है, प्रमाण
बिल्कुल, प्रमाण क्या हम हिंदी में जाने, प्रमाण सबूत। प्रमाण दो पार्ट्स में एक तरीके से इसे ब्रेक डाउन करें तो प्रा का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, अमाना का मतलब होता है मेजरमेंट, बिल्कुल, ठीक है। और प्रमाण के 6 पार्ट हैं एक्चुअली में। एक है प्रत्यक्षा। प्रत्यक्षा में क्या होता है कि जैसे कि सेल्फ एक्सपीरियंस से लर्न करना। जैसे कि छोटा बेबी होता है, सर एग्जांपल देता है, छोटा बेबी होता है, अगर वो मोमबत्ती को टच करता है, और ये फैक्ट भी, आप बच्चों को मना करोगे, वो भाई क्यूरियोसिटी के लिए वो मना करोगे, अब जल रहा है वो और जाएगा, तो वो जल जाएगा, ठीक है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा उसे पता नहीं लगेगा फायर क्या चीज है, ठीक है, वो जल गया, ठीक है, जल गया, उसका हाथ जल गया, तो उसने सीखा कि भाई अगर मैं मोमबत्ती के पास जाऊंगा, उसको टच करूंगा तो आई कैन बी बर्न, ठीक है, तो जल जाऊंगा मैं। तो फिर उसके बाद वो कभी नहीं, वॉलंटरली कभी नहीं जाएगा, जानबूझ के तो कभी नहीं जाने वाला, किसको याद रहेगा, तो सिंपल सी बात, कोई नहीं जाता। ठीक है, ये था प्रत्यक्षा। फिर था अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कि अगर हम कुछ चीज जैसे कि कैलकुलेट करके, बिल्कुल, नॉलेज लेना, जैसे कैलकुलेट करके हम नॉलेज ले रहे हैं, जैसे कि मान लो हमें फाइंड करना है कि यहाँ से लेके वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है, तो इसमें हम लोग मतलब 10 फीट में हम लोग क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं एक तरीके से, तो उसका है अनुमान, लॉजिक कंक्लूजन एक्चुअली। उसमें एग्जांपल दिया था कि यार घड़ी जो है हम लोग लेफ्ट हैंड में बांधते हैं, और लॉजिकली देखो आप तो अधिकतर लोग राइट हैंड ही होते हैं, और उसमें जो नॉब होती है ना, अगर आप एनालॉग वॉचेस की बात करो तो नॉब जो होती है हमेशा राइट साइड में होती है, राइट साइड में नॉब होती है एडजस्ट करने की उसके, वो ये एक्चुअली में था, एग्जांपल में बताया था इन्होंने। तो एक थर्ड होता है उपमाना। उपमाना में क्या होता है कि जैसे कि सिमिलैरिटीज के ऊपर, सिमिलैरिटी से नॉलेज लेना, जैसे कि चंद्रमा है, ठीक है, वो एक सैटेलाइट है अर्थ का, क्योंकि वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो सेम चीज में सेम सिमिलैरिटी से हम लोग जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो हमारे अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करता है और प्रोवाइड करता है जो चीजें, बिल्कुल। और हम लोग बोलते भी कि अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल जो सैटेलाइट है वो क्या है, चांद है, चंद्रमा। तो इसके यार मतलब एक्चुअली में सिर्फ 8 उन्होंने बताए थे, काफी कुछ था उसमें, आप अगर देखो लाइन से अगर ऐसे, तो एक्चुअली में बोलने का ये सारी चीजों का मतलब है कि हम अगर इसको डिटेल में आपने देखी है वीडियो, तो हम क्या इसको और एक्सप्लोर करें, और देखो एक लाइन में समझ जाओगे, हम लोग एक लाइन का है एग्जांपल सर ने अच्छे से बताया भी, तो आप समझ जाओगे ये नॉर्मल है, कोई खास नहीं था। कुल मिला के बात ये थी कि भाई ये जो हमारा धर्म में ये जो चीजें हैं वो किसी भी तरीके से हम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे साइंस को, ना हमारी साइंस करेगी, रिलीजन को हो सकता है एज अ धर्म जो इन्होंने बताया, और एक्चुअली में हम लोग उसी के फॉलोअर्स हैं, एक्चुअली में हम उसी के फॉलोअर्स हैं। हर एक चीज एकदम साइंटिफिकली डिराइव्ड थी हमारे पास, आज भी है, हम मानते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं हिंदी में, उसके जो जनक थे बुद्धियान, क्या नाम समथिंग था ना उनका, कुछ पाइथागोरस करके उनका नाम भी था, वो एक उन्होंने बताया था। और हमारे यार मैं कह रहा हूँ हमारे उपनिषद में यार नॉलेज तभी पड़ी है। अब देखो ये लगा लो कि बाइनरी सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज होता है, क्योंकि हम जो भी नॉलेज हम लोग टाइप करते हैं, बुद्धियाना जी का नाम लिया, पिंगलाचार्य का नाम लिया, इन सबका नाम हमने सुना है, सबका सुना है। और छंद शास्त्र में ये सब मेंशन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज है, छंद शास्त्र है। इन्होंने चंद बोला है, मैं छंद बोलते हैं हिंदी में, छंद शास्त्र। अब देखो, अब ये लगा लो कि हमारा जो धर्म है हिंदुत्व, ठीक है, उसके अंडर में बहुत सारी चीजें, बाइनरी सिस्टम जो आजकल कंप्यूटर में आपको सबको पता है कि मतलब जो कंप्यूटर फील्ड के होंगे, जो थोड़े बहुत जानते भी होंगे, उनको ये पता है कि जब कंप्यूटर कुछ टाइप करते हैं तो वो जाता है, ऑब्वियसली बात है, कीबोर्ड की, मतलब कीबोर्ड से एंटर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी के टर्म्स में, वो दिया गया है इंडियन द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इतना पुराना है ना, मतलब अब लगा लो कि अब जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में बात करी थी कि जो सर्जरी जो फर्स्ट परफॉर्म हुई थी वो इंडिया परफॉर्म हुई थी 1200 BC समथिंग, बहुत पहले हुई थी यार, 300 BC के आसपास की बात है शायद। उसके बाद आता है आपको ज्योमेट्री का क्या, ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट आज के टाइम, आर्किटेक्चर जो हमारे, ज्योमेट्री आपकी, कैलकुलस उठा लो, मैथमेटिक्स की जितनी भी आपकी चीजें ना, जो एकदम मैथमेटिक्स एक्चुअली में जो बनी है, दुनिया को समझ में नहीं आती क्यों इंडियंस बोले जाते हैं मैथमेटिक्स में एडवांस है। हो सकता है भाई हमारे एंसेस्टर ने बनाया, हम इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में जनरली ऐसा माना जाता है कि इंडियंस तेज होता है। फिर और फिर टाइम कंप्यूटेशन का ही बताया कि भाई जैसे कि यहाँ से मुझे वहां तक जाना था, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था उज्जैन का, उज्जैन महाकाल जी, हिंदी में हम बोलते हैं, जो हमारी लाइंस होती है ना, कौन सी लेटरल्स कहते हैं हम दोनों को, देशांतर रेखा, और एक वो एक्चुअल में हम पुराने इसमें है कि हमारा जो उज्जैन मंदिर है MP में है शायद, वहां से वो पॉइंट चालू होता है, उसमें ये मतलब था। इन्होंने ग्रीनविच करके कोई जगह है, साइंस ने बाद में वहां पे खिसका लिया, लेकिन आज भी जितने सटीक वहां से अनुमान लगाए जाते हैं वो कहीं नहीं है। बहुत चीजें हैं भाई एकदम, मतलब और
इसमें जो नहीं था उसमें शल्य चिकित्सा में बहुत सारी चीजें थी, आपका गर्भशास्त्र हमारे पास, गर्भशास्त्र मतलब इंडिया में एक धर्म मतलब इसको जो भारत में हुआ है कि भाई स्टेजेस कैसे कैसे होती है, जैसे कि अगर फर्स्ट नाइट का देखा जाए तो एक नोड्यूल फॉर्म होता है, माइक्रोस्कोपिक नोड्यूल, मतलब जो इजैकुलेशन होता है इनसाइड द, वो टेक्निकल चीजें बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, डॉक्टर्स को पता होंगी, मुझे नहीं पता तो नहीं, मैं तो जब हम लोगों ने जो पढ़ा है बोल सकते हैं, मतलब 9 मंथ होता है ना, 9th मंथ, उसके अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी के सबके सब डेवलप्ड हो जाते हैं, ये मान के चलो। तो भाई जो साइंस मॉडर्न कहता है वही चीज हमारे उसमें लिखी हुई है, ऐसा ही लगभग बताने की कोशिश की इन्होंने अपने उसमें। और हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ना उसमें एक एक लाइन में जो श्लोक्स हैं, एक्चुअली में वो श्लोक नहीं है, वो श्लोक नहीं है, आप अगर ध्यान से देखो वो एक बहुत ही बड़ा मतलब लेके अपने साथ चल रहे हैं। जैसे आपका इन्होंने 2-3 श्लोक्स का वर्णन किया अपनी इस बात में, भाई उन श्लोक्स को डिराइव किया गया तो कोई पाइथागोरस को वो बोल रहे थे कि रस्सी रज्जो करके कुछ पूरा था। जब आप अगर किसी भी पाइथागोरस में क्या होता है, वो जो पूरी लाइन होती है डायगोनल वाली, वैसा ही कुछ होता है पूरा, उसका एरिया वगैरह कैलकुलेट पहले से ही उसकी टोटल। हम लोगों ने इसका एनसीईआरटी की बुक जब हम पढ़ते थे तो भाई इसमें था हमारे उसमें, हम लोग हमारे जो लोग जनरली क्या करते हैं वो डायरेक्ट करना, मेरे तो हमारे फादर वगैरह पहले वो पढ़ो कि आया कहाँ से और किसने बनाया सब। पाइथागोरस ज्योमेट्री का ना बेस है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बनी थी भाई, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी ये भी है, क्या नहीं दिया है ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन भाई ये था, और उसमें भाई गुरुत्व उस टाइम बोला गया था आयुर्वेद में, ये था कि जितना ऊपर जाएगा उतना ऐसा कुछ था, इन्होंने जो बताया था अप एंड डाउन का कुछ था कि कोई बल है जो नीचे खींचता है, जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्व की शक्ति, ग्रेविटेशन फोर्स। तो बोला भी इसमें कि हमें न्यूटन वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी उन्हें मानते हैं भैया उन्होंने बहुत अपने फील्ड में काम किया है, बट जो उसका बेस है ना वो भारत से ही आया, वो झुटलाना नहीं जाना चाहिए। और कितने लोगों को तो पता ही नहीं, हम लोग हंसते हैं अपने अपने वेद पे हंसते हैं, अरे तो मिथ है सब, ये है फलाना है ढिमकाना है। और कैसे नॉलेज फ्लो हुई है ना हमारे ईस्ट से, हमारे देश से ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, इसीलिए भारत को आप विश्व गुरु बोल सकते हैं। इसीलिए विश्व गुरु कुल मिला के कंक्लूजन यही था पूरी वीडियो का भाई, कि हम विश्व गुरु क्यों कहलाते थे, सोने की चिड़िया हम क्यों कहलाते थे। इसमें तो चिड़िया की बात हुई नहीं है कि पैसा क्यों था, तो हम और वीडियो में देख चुके हैं। विश्व गुरु एक्चुअली में था कि हम गुरु थे, हम चीजें बताते थे, हम बनाते थे वो चीज, डेवलप स्टार्ट करते थे, पायोनियर थे हम हर चीजों के। पहली सिविलाइजेशन हमारे पास है काफी पुरानी, आज भी हम प्रूव नहीं कर पाते कई चीजें, लेकिन माना जाता है कि हाँ इंडियन सिविलाइजेशन है, और इजिप्शियन भी मानी जाती है, लेकिन सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हमारी है। अब धीरे धीरे सबूत मिल रहे हैं तो लोग मान रहे हैं, भाई मानना पड़ेगा आपको। और फिर वीडियो के मतलब जाते जाते सर ने बताया था सूडो साइंस क्या है। तो सूडो साइंस बेसिकली क्या है कि सर जैसे कि एग्जांपल सर ने दिया था, मतलब एग्जांपल ये दिया था कि भाई एक थे शिष्य, एक थे गुरुजी उनके, ठीक है, एक था वो हिरन का बेबी डियर, उसको बांध देते पेड़ से और सोचते, फिर वो मेडिटेट करते थे पीस, क्योंकि वो परेशान करता था, बोलता ऑब्वियसली बात, ठीक है। अब फिर ये बन गई, आदत बन गई उनकी कि जब तक हम डियर को बांधेंगे नहीं ना, हम शांति से मेडिटेट नहीं कर सकते। ये चीज मतलब चलती है, मतलब ये था, इसके पीछे एक लॉजिक था, ठीक है, उस टाइम कि भाई उस टाइम हमारी कई चीजें ऐसी है भाई जो ये वो बन गया, मिथ बन गया कि अगर हम मानेंगे नहीं तो आएगा नहीं। जैसे कि हम होते नहीं कि मेरा पता क्या है, मेरा पता है मुझे चप्पल सीधे करने का बहुत शौक है, चप्पल सीधे करता हूँ भाई मैं ऐसे, मैं चप्पल सीधे ना करूँ ना तब तक मुझे तो बस पीस नहीं मिलता, वो चीज है। वही बात है भाई, ये हमारी कई चीजें जो उस टाइम जिस टाइम ये सब चीजें हुई थी वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दी गई, ऐसी लॉजिक नहीं है, हमें फैक्ट नहीं है, बट ये चीज है और हमें वो कर दिया गया, हमारी चीजों को मिथ बोल दिया गया। एक्चुअली उस टाइम होगा किसी कारण में वो एक ट्रेडिशन सा बन गया। तो इस वीडियो में सर ने ज्यादा ये भी बोला है कि रिलीजन हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट करता हो साइंस को, लेकिन धर्म जो है धर्म नहीं, वो करता ही है, धर्म कॉम्प्लीमेंट करता है, धर्म बेसिकली आप कह सकते हो बेस है ऑफ साइंस, मॉडर्न साइंस, जो हम साइंस आज पढ़ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड पे, वो सब धर्म। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को, और कई लोग भी मानते हैं भाई कि इस पूरी सृष्टि का ना, पूरी दुनिया का एक्चुअली में जो बेस है, जो आधार है, वो हमारे शास्त्र है। ये हमारे शास्त्र है, उसको डिराइव करो, उसको जो उसको पढ़ लेगा उसको दुनिया में कोई किताब पढ़ने की एक्चुअली में जरूरत नहीं। आप ये लगा लो कि क्योंकि वो खुद साइंस और सबको कॉम्बिनेशन है वो पूरा। आप बोला जाता महाभारत रामायण आप देख लो, ऐसा कोई ह्यूमन लाइफ का इंसिडेंस नहीं है, इमोशन नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, हर चीज मिलेगा। वो इसीलिए बोलते हैं एपिक है, ये सब दोनों बहुत बड़े एपिक्स हैं आपके। अगर आप बोलो एस राजामौली और कई सारे विदेशी जो वो है ना डायरेक्टर्स वगैरह, उन्होंने हमारे इस धर्म से कई सारी चीजें निकाली,
जापानीज कई चीजें थी, उन्होंने बोला कि हमने ये जो सीन है ना ये रामायण के रथ वाले से डाला था जो पुष्पक विमान गया था। ऐसे सीन है जिनको हम देख के ना, हम दिक्कत हमारी पता है कि अंग्रेजों को देख के ताली बजाने की आदत पड़ गई है कि वो करेगा तो ही सही है, ये हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया गया है। सूडो साइंस वाला हाल है। सूडो साइंस चल रहा है हमारे साथ। हाँ, सूडो साइंस वाला हाल हमारा ये है कि जब तक ये विदेशी हमें नहीं बताएगा ये हम तो गलत हम मानेंगे नहीं, हम गलत रहेंगे। हम अपने बंदों की एक बात नहीं सुनेंगे, वो हमारी चीजें लेके उसी को ट्रांसफॉर्म करके हमें पेश करना है। आप ध्यान से देखो तो पाइथागोरस नाम से देखो, मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, इतना ज्यादा फेमस है पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली में कौन था? इन्होंने एक और चीज बताई थी पिंगल जी की, वो कुछ क्यूब्स वैसे करके बनते हैं, उसके बारे में बताया। कैलेंडर भारत में बना यार पहले तो, सब नॉर्मल अगर बताऊं तो नेविगेशन सिस्टम डेवलप पहले भारत ने किया है, सब कुछ पहले किया है। पहले का मतलब समझ रहे हो, उसको रिफाइन करना आसान होता है, मतलब उतनी मेहनत नहीं लगती कि चीज को एकदम इन्वेंट करना, ढूंढना जितना मुश्किल है। और यार क्या बताऊं मैं वीडियो के बारे में, वीडियो बहुत ज्यादा टेक्निकल तो देखो है ही यार। और आप इस वीडियो को देख के ना भाई किसी भी कंट्री में जाके बोल सकते हो कि भाई मैं भारत से हूँ। अंग्रेजों के मुंह पे फेंक के मारो ये वीडियो, अंग्रेजों के मारो। मैं तो पता ये सोच रहा हूँ कि भाई जो हमारे जो जला दिए गए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो महीनों तक बुक्स जली थी, उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन होंगी यार। आप सोचो अभी हम लोग, मतलब एकदम बहुत बुरा लग रहा है ये सब जान के। मुझे तो लगता है कि भाई उसके अंदर ये भी होगा कि भाई हम उड़ जा सकते हैं, सब कुछ होगा यार। होस्टो पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबल। अगर देखो महाभारत की एग्जिस्टेंस है, रामायण की एग्जिस्टेंस है, इसका प्रूफ है, उसमें लोग उड़ते थे, बिल्कुल। तो इसमें क्यों उड़ सकते हैं भाई? और भाई अब मैं बोल रहा हूँ भाई, एडम्स ब्रिज बोला जाता है, एडम्स ब्रिज बोला जाता है, वो पता है किसको? राम सेतु को इंग्लिश में बोला जाता है एडम्स ब्रिज। मुझे तो लगता है एडम और ईव की कहानी और राम सीता की कहानी है। मैं बता रहा हूँ तो मैं ये कहानी मुझे लगता है एडम्स ब्रिज, क्योंकि उसी को बोला जाता है, और वो राम सीता की कहानी एडम एंड ईव, वो एक्चुअली में वो यही है। अब ये मत बोलना कि वो सही बोला, सेकुलर बंदे हैं मैं चैनल तो हो रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। इनफैक्ट एडम्स ब्रिज बोलते हैं और हम राम सेतु बोलते हैं। उसको एडम्स ब्रिज नाम क्यों दिया उन्होंने, सोचने वाली बात है। और ये एडम ईव की कहानी पढ़ना, काफी सिमिलरिटीज सी दिखेगी, अलग तरीके से है थोड़ी सी। तो ये सब भाई एक्चुअली में वो भी मानते हैं, पर बात ये है कि इतने साल हो गए ना इन चीजों को, हम यार आज की चीज कल भूल जाते हैं। ये तो हजारों साल पुरानी चीजें हैं, तुम सोच रहे हो आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज से 1000 साल बाद तो कोई नहीं पूछेगा कि कौन राघव थे कौन संजीव थे, और क्या पता यूट्यूब भी ना रहे या फिर ये पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाए, कुछ और आ जाए। समझ रहे हो, 1000 साल बाद की बात करो। कुछ नहीं पता भाई, हो सकता है कि कल को हम लोग उड़ने लग जाए, कि हो सकता है कि हम लोग कल को बंदरों के फॉर्म में दोबारा से जन्म ले, क्या पता, कुछ नहीं पता भाई। लाइफ एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई। तो पूरी कहानी उसी पे है कि कुल मिला के आप, मैं बोल रहा हूँ मैंने जो सीखा मैं बताता हूँ। मैंने इसमें एक चीज सीखी, पूरी चीज अपनी तरफ, इनकी जो बात थी वो तो है ही। मैंने ये सीखा कि भाई हमारा जो धर्म और शास्त्र है ना, मैंने जो सीखा है, किसी भी बुक, कोई भी बुक उसकी बराबरी तक नहीं कर सकता। समझ रहे हो आप, मतलब उसके 0.1% भी नहीं है जो हमारी बुक है हमारे पास। 12 उपनिषद है शायद, 4 वेद्स हैं, वेदों की भी फिर फॉर्म्स हैं। सोच रहे हो आप कितना, हमें पता ही नहीं है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, पता है किसी को? कुछ नहीं पता। नाम पता है, वो भी कितनों को ये भी नहीं पता होगा जो मॉडर्न साइंस में टिकटॉक में हिलते रहते हैं ना लड़के, उनको तो कुछ नहीं पता होगा। और मैंने इस वीडियो सीखा कि भाई जो भी इस वर्ल्ड में हो रहा है ना, वो सब कुछ भारत की देन है। बिल्कुल, धर्म से, वेदास से, धर्म को यार देखो, धर्म को मतलब सब कुछ कनेक्टेड है वेदास से, धर्म से। और धर्म को रिलीजन से अलग, रिलीजन अलग चीज होगी, धर्म अलग होगी। हम भी अपनी कई वीडियो में रिलीजन जो एक कॉन्सेप्चुअल है, तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज करा गया है कि भाई कोई सूडो साइंस वाला हिसाब हो गया। हाँ, सूडो साइंस वाला हिसाब, एक चीज ने फॉलो करने की फॉलो करने लगे उसी चीज को। और हिंदुत्व जो है ना वो धर्म है, और हम ये सारी कहते हैं कि सनातन धर्म है। एक्चुअली में हम हिंदू, सूडो साइंस वाला लैंग्वेज हो गया, एक्चुअली में हम सनातनी है, सनातन धर्म के लोग हैं। मैं ये आप अगर पढ़ोगे कभी भक्ति आंदोलन, उसमें भी इसी बात पे जोर। लेकिन भक्ति आंदोलन में अगर आप देखो तो एक्चुअली में यही बोला गया कि मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये सब समथिंग था। भक्ति आंदोलन चला था भाई 1000 साल, सबसे ज्यादा बड़ा आंदोलन है। अब देखो तो 700-800 में शुरू हो गया था होना, 1900 कब तक चला। कालिदास, कबीरदास सब आए इनमें, बहुत बड़े बड़े नाम आए, शंकराचार्य हुए इसी में, सबने प्रमोट किया। तो आप अगर मतलब यार मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना, जब मैं बैठता हूँ पढ़ने, तो मेरे को और सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जो मैंने पुरानी पढ़ी है। मतलब एकदम गूज बम्स आते हैं कि यार
पहले मुझे मैम जब हम लोग छोटे थे ना तो कोई कहता हिस्ट्री पढ़ ले तो हम कहते थे भाई हमें क्या मतलब क्या भाई देखा जाए तो जो हमारी हिस्ट्री थी ना वो सब इन्वेटर्स के ऊपर ही बेस्ड थी, तो भाई पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करता था, सिंपल सी बात है। असली हिस्ट्री पता ही नहीं है। इसी तो ये है भाई, ये हिस्ट्री नहीं है भाई, ये साइंस है। ये हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ही हिस्ट्री नहीं है, फैक्ट है। इफेक्ट और साइंस है, साइंस एकदम फैक्चुअल चीज है, कोई इसमें ना इधर ना उधर। और आप सब क्या, अरे यार भाई मैं कह रहा हूँ तुम कितनी आपने देखी होंगी अंग्रेजों का जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हम मानेंगे नहीं क्या वो चीज। हम मानेंगे, तुम मिथ बोलो या कुछ भी बोलो हम तो मानेंगे। राम सेतु है तो है, और राम सेतु ही है। समझ में आया? तो ये था वीडियो, और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ ना आप लोग, अगर आपको समझ ना आए ना वीडियो, तो अब जो हम लोग बोल रहे हैं ना यार वो तो जरूर देखना, क्योंकि हमने अपने विचार रखे हैं उस पे आपको भी। हाँ, और आप खुद हमने पूरी कोशिश करी है आसान भाषा में समझाने की आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है, तो ये था वीडियो। आई थिंक हम लोग को चलना चाहिए, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, 40 मिनट का हो चुका है ये वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं। और जाने से पहले हमें करना ये होता है, ये वीडियो करना होता है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। ठीक है भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़रूर देखें, ऐसी वीडियो को प्रमोट करें। जो बंदे या फिर जो लोगों को नहीं पता एक्चुअली हमारी हेरिटेज क्या है, हम कितने रिच थे, हमारे एंसेस्टर ने क्या योगदान दिया है हमें, और हमें किस तरीके से हमारे जो माइंड को वॉश किया गया कि नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं था, आंखें खोलने का है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भाई जिसने रिकमेंड किया धन्यवाद, थैंक यू, गुड वीडियो ब्रो। और इसीलिए हम चाह रहे थे कि हम एकदम शांति से देखें चीजें, क्योंकि हमने टॉपिक जब देखा तो हमने कहा नहीं यार ये मतलब डेडिकेटेड वीडियोस पे एकदम प्यार से पूरे दिमाग के साथ देखनी पड़ेगी एकदम। ठीक है भाई, वीडियो करेंगे एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।